Assalamu alaikum class, it's me Laiba Rafique, and today we will be doing unit number 5, women entrepreneurship through empowerment. इसकी हम करने लगे क्लास एक्सरसाइज स्टार्ट. So previously class if you all remember हमने इसकी किए थे क्वेश्चन एंड आंसर्स को, और अब हम लोग करने लगे क्लास इसकी मल्टीपल चॉइसेस को कवर अप. So let's begin with it. So firstly open up your books class. ओके क्लास, सो आज हमें जो करना है क्लास, हम करने लगे इसका पार्ट बी एक्सरसाइज का. सो लेट्स बिगिन विद इट. सो पार्ट बी में क्लास हमारे पास दिए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं. सो हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, स्टेटमेंट्स हैं, अलॉन्ग विद दैट सम ऑप्शंस आर आल्सो गिवन टू अस. सो वन बाय वन लेट्स रीड अलाउड द स्टेटमेंट्स एंड लेट्स लुक आफ्टर द ऑप्शंस दैट आर गिवन. सो सबसे पहले स्टेटमेंट क्लास हमारे पास क्या है? हाउ डज एंटरप्रेन्योरशिप हेल्प वुमेन चैलेंज सोसाइटल नॉर्म्स इन पाकिस्तान. सो क्लास इसमें हमने क्या पूछा जा रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वुमेन्स को कैसे हेल्प करता है कि वो सोसाइटी की नॉर्म से सेटेड स्टैंडर्ड ये रूल्स के करे, चैलेंज करें इनको. ठीक है जी. अब हम क्लासेस के ऑप्शंस देखते हैं. सो लेट्स हेड ओवर टुवर्ड्स योर बुक्स. फर्स्ट, बाय इंकरेजिंग वुमेन्स टू फॉलो ट्रेडिशनल रूल्स, कि हम वुमेन्स को इंकरेज करें कि वो ट्रेडिशनल रूल्स फॉलो करें. नहीं, इस तरह से तो चैलेंजिंग कभी भी नहीं होती. बाय डिस्करेजिंग देम फ्रॉम स्टार्टिंग देयर ओन बिजनेस, नो, हमने अपनी वुमेन्स को डिस्करेज नहीं करना. वी हैव टू इंकरेज देम सो दैट दे कैन स्टार्ट न्यू बिजनेस वेंचर्स. बाय लिमिटिंग देयर एक्सेस टू एजुकेशन एंड रिसोर्सेज, नहीं, हम उनके एजुकेशन और रिसोर्सेज के को लिमिट नहीं कर सकते. ठीक है जी. नाउ द थर्ड लास्ट ऑप्शन इज बाय प्रोवाइडिंग देम विद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड लीडरशिप रोल्स इन देयर कम्युनिटीज. सो क्लास हम अपनी फीमेल्स को एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करके और एक लीडरशिप क्वालिटी देके इनको हम हेल्प आउट कर सकते हैं कि वो चैलेंज करें सोसाइटल नॉर्म्स को. ठीक है जी. सो लुक टुवर्ड्स आंसर. बी, by providing them with financial independence and leadership roles in their communities. So class option number B is the answer, and I've highlighted it with a blue marker as well, so it's very clear to all of you, I hope. So let's head over to the question number 2. How does societal norms influence the success of women entrepreneurs in Pakistan? So class जो सोसाइटल नॉर्म्स हैं, जो स्टैंडर्ड रूल्स हैं, वो किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हम सक्सेस को, एक यंग वुमेन एंटरप्रेन्योर को. सबसे पहले क्लास हम इसके कुछ ऑप्शंस देख लेते हैं. दे क्रिएट सपोर्टिव एनवायरनमेंट फॉर वुमेन्स टू ग्रो देयर बिजनेस. नहीं, हमारी सोसाइटी इतनी भी ओपन माइंडेड नहीं है दैट दे आर क्रिएटिंग ओपन अपॉर्चुनिटीज. ठीक है जी. नाउ ऑप्शन नंबर बी, दे इम्पोज लिमिटेशन दैट ऑफन रिस्ट्रिक्ट वुमेन्स एबिलिटी टू बैलेंस हाउसहोल्ड ड्यूटीज एंड बिजनेस एस्पायरेशंस. Okay, they encourage women to enter male-dominated industries. No, they will never let women enter the male-dominated industries. ठीक है, वो कभी भी इस चीज़ को encourage नहीं करती हमारी society इस चीज़ को. They provide equal opportunities for men and women in business. No, they are not equal opportunities for the men and women in the business right now. So the correct option is option number B. Let's head over towards the answer. So they impose limitations that often restrict women's ability to balance
women's ability to balance household duties, with business aspirations. ठीक है जी, सो क्लास मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है that they impose limitation that often restricts women's ability to balance household duties with business aspirations. ठीक है जी, now let's head over to the question number 3. That is, what can be inferred about the impact of women's entrepreneurs on job creation in Pakistan? सो क्लास में इसके भी कुछ ऑप्शन देखते हैं। हमारे पास क्या दिया है, women entrepreneurs benefit themselves only financially? नहीं, if a women entrepreneur is working, she will not only financially benefit herself. ठीक है, वो अपने ऊपर ही फाइनेंशियली वर्कअप करेगी और भी चीज़ों पे फाइनेंशियली उनको बेनिफिट करेगी अपनी ज़ात से भी। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन नहीं बनता। ऑप्शन नंबर सी, women entrepreneurs discourage community development. She will never discourage community development because she herself has faced a discouragement before starting the business. Okay, women entrepreneurs have minimal impact on employment. नहीं, उनका minimal impact होता नहीं है employment. They are having a vast impact on employment. Option number B, that women entrepreneurs contribute to job creation, especially for the women and the youth in their communities. Yes, that's the correct one. So let's write down the answer. Women entrepreneurs contribute to job creation, especially for other women and youth in their communities. ठीक है जी, अब हम क्लास पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। हाउ माइट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स contribute to gender equality in society? Women entrepreneurs, so क्लास women entrepreneurs हमारे पास gender equality किस तरह से कोप अप करती हैं, contribute किस तरह से कर रही हैं, हम इसको देख लेते हैं in the equality. So let's head over to its options. By reinforcing traditional gender rules? नहीं. Why would they reinforce the traditional gender norms when they are coping for the equality? ठीक है, by challenging stereotypes and promoting women as capable leaders and decision makers, by reducing participation of women in economic activities, नहीं ये भी नहीं बनता, by limiting the opportunities for the business growth, no, it's also not the correct one. So the correct option over here is by challenging the stereotypes and promoting women as a capable leader and decision makers. ठीक है जी, इसके आपको याद हो चैलेंज स्टीरियोटाइप्स हमारे पास क्या है? चैलेंज स्टीरियोटाइप ये है दैट वीमेन एंटरप्रेन्योर्स विल चैलेंज स्टीरियोटाइप, वो एक पर्टिकुलर माइंडसेट जो उनके रिगार्डिंग क्रिएट किया गया है, दे विल फाइट बैक विद द पर्टिकुलर स्टीरियोटाइप्स एंड दे विल आंसर देम. ठीक है, बाय बिकमिंग अ कैपेबल लीडर एंड डिसीजन मेकर. ठीक है, एक बहुत अच्छा लीडर और एक बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग पावर के साथ उस चीज़ को कोप अप करेंगे, इसको चैलेंज अप करेंगे. ठीक है, लेट्स नोट डाउन द आंसर ऑफ दिस क्लास. So, by challenging stereotype and promoting capable leaders and decision makers. Here is the class. This is the answer of this one. Now let's head over towards the last one.
What is the long-term benefit of women entrepreneurs acting as a role model for the future generation? So क्लास का एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या होगा वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का, जो वो एक फ्यूचर जनरेशन के लिए एज अ रोल मॉडल एक्ट अप करती हैं? इसे कुछ ऑप्शन हम लोग रीड आउट करते हैं. इट रिस्ट्रिक्ट्स द यंगर जनरेशन फ्रॉम ब्रेकिंग द ट्रेडिशनल रूल. नहीं, वो उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रही, सो ये नहीं बन रहा. इट डिस्करेजेस अदर वुमेन फ्रॉम द एंटरिंग द बिजनेस. व्हाई वुड वन वुमेन हु इज ऑलरेडी हैव why would one woman who has already faced the discouragement will discourage the other one? So it's also not the correct one. It empowers women to pursue their ambition. It has no significant impact on younger generation. तो इसका तो कोई बनता नहीं है, इनका तो एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारी यंगर जनरेशन के ऊपर. सो द क्लास द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट लेट्स सी इट empowers women to pursue their ambition. It empowers women to pursue their ambition. So class, these are the multiple choice options. Okay class, let's begin with the next exercise. As you all can see that we are supposed to read the text and fill the blanks with appropriate words and phrases. So let's begin with reading the text and let's fill up the blanks. So the first statement is entrepreneurship is the process of starting, managing and growing a dash venture. So if you all remember paragraph किस बिल्कुल चैप्टर के बिल्कुल इनिशियल में फर्स्ट पैराग्राफ में इसका आंसर मेंशन है, in growing a business venture. ठीक है जी, let's move towards the second one. Entrepreneurs identify dash, take calculated risk and bring innovative ideas to life. So entrepreneurs identify क्या करते हैं? वो identify करते हैं opportunities को. The option is answer is opportunities. Let's move towards the statement number 3. Hazrat Khadija Radhiyallahu anha was a successful dash from Makkah Mukarramah, known for wisdom and leadership. Hazrat Khadija Radhiyallahu anha class क्या थी? She was a very successful businesswoman. Since I was having some short space, so I have written it down. Okay, so let's move over towards the statement number 4. That is, one of the main benefits of the women entrepreneurship is that it promotes dash by challenging traditional gender roles. So ये क्या promote करती है क्लास? यहाँ पर women entrepreneurs किस चीज को promote कर रहे होते हैं? ये promote करते हैं equality को. ये बराबरी को promote करते हैं कि औरतों के और मर्दों के काम में एक बराबरी होनी चाहिए. ठीक है जी. Let's come toward the last statement. In Pakistan, women entrepreneurs are active in sectors such as fashion, technology, and dash education. So, पाकिस्तान की जो women हैं वो किन careers में बहुत ज़्यादा active हैं, कुछ mention किए हैं. So, one is missing over here, that is food. So in Pakistan, women entrepreneurs are active in sectors such as fashion, technology, food and education. So class with this हमने इस exercise को complete कर लिया है. So I hope it is very clear to all of you. So class, this was all for today's lecture. Till then, take care, goodbye and Allah Hafiz.